I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So good evening to all. I hope I am audible to you. And today we'll see the last part of your flow of fluid. For fluid flow. So we have seen this chapter from book also, flow of fluid. Tomorrow we'll see the transportation of fluid. We have seen this chapter from book in the previous two parts, flow of fluid. So that is nothing but the flow of substance that do not permanently resist the distortion. There is a technical definition. Statics means fluid at rest, and fluid dynamics means fluid fluid dynamics means fluid in motion, right? So fluid consists of a mass followed by a series of layers. When we'll try to make changes in the shape of fluid, so the layers will slide on one another until new shape is formed, and the force will be relieved off to the fluid, and fluid will start flowing. So it is seen in the different industry in the handling of material, during the transportation of solution suspension. We have seen that behavior of liquid will change during the handling. We have seen this. We have seen the fluid static. We have seen the fluid static, right? We have seen the fluid dynamics also. We have seen the what do you mean by manometer. For GPAT, manometer is important. So manometer is the device used to measure the pressure differential. Question आता है आपको. So there are simple manometers, and then there is a there are simple manometer, differential manometer, and inclined manometer. So simple manometer, most commonly used. So U-tube shaped U-tube glass U-shaped tube filled with the liquids. Two immiscible liquids with different in the density. So when pressure is high, when pressure differential measurement is high, so mercury is used as a monometric liquid. When pressure difference is small, alcohol, water, and carbon tetrachloride can be used as a manometric liquid. So for the measuring of consumption of gas in the chemical reaction, along with the flow meter, they are used to measure the flow of fluid. This is a venturimeter or a phase meter. Today we are going to see. Pointer tube is also used to measure the velocity head using manometer. Differential manometer, when they are used, they are sensitive devices, and they are used to measure the small pressure differential. We have seen this inclined manometer. They don't have application in the pharmacy. So then we have seen the fluid dynamics. We have seen the Bernoulis theorem also. We have seen the, जैसे यहाँ पे देखो मैनोमीटर के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, 3-4 बार बोल चुका हूँ. Simple manometer, differential manometer, inclined manometer, right? Now we have seen the Reynolds experiment also in the details. So I'm not going to revise it. We have already seen Reynolds experiment in the detail.
what do you mean by laminar flow? Laminar flow, remember, laminar flow is also known as a streamline flow, also known as a viscous flow. Laminar, viscous or streamline, and then turbulent flow. Yeah, we have already seen that. So observations, what this is, we have covered in the last lecture also. So you can watch previous lecture also. So I will directly move to the main part. So remember, when Reynolds number and type of flow, question already आ चुके हैं GPAT में. So when Reynolds number is less than 2000, when Reynolds number of fluid is less than 2000, so that means the flow of fluid is laminar. If Reynolds number of fluid is more than 4000, that means the flow of fluid is turbulent. And if Reynolds number of a fluid is between 2000 to 4000, so that means flow is changing from laminar to turbulent. तो अगर 2000 है ना, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 के नीचे है तो उसको लैमिनार फ्लो बोलेंगे उस फ्लूइड को. अगर फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर अगर मोर देन 4000 है तो इन दैट केस टर्बुलेंट फ्लो होता है. अगर फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर इन बिटवीन 2000 टू 4000 है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या होता है कि फ्लो है ना, फ्लो इज चेंजिंग फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट. तो ऊपर क्वेश्चन आता है, वी हैव ऑलरेडी सीन द एप्लीकेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर to predict the nature of flow, to know to study the physical stability of suspension invention. We have already seen the Bernoulis theorem when application of energy conservation applied it to flow of fluid. The resultant equation is nothing but the Bernoulis theorem. We have also seen Bernoulis theorem state that the for a in a steady state, ideal flow of an incompressible fluid, the total energy per mass unit will be constant, which has your kinetic energy, pressure energy and potential energy. Pressure energy is pressure energy, potential energy, kinetic energy. We have already seen yesterday concept of pressure head also. We have seen this experiment yesterday. Application of Bernoulis theorem also. We have seen the energy losses during the fluid flow. So there are different energy losses like frictional losses. In that frictional losses, Henning equation is used, right? For streamline flow, again Paul's equation is used. Then fitting losses, enlargement losses, contraction losses we have seen. Now next point is this: measurement of fluid flow. So there are different methods to measure the flow rate of fluid. Fluid जो flow होता है तो उसको measure करने के लिए flow rate है ना. What are the method? First method is a direct weighing method. Second method is a hydrodynamic method. In a hydrodynamic methods we have examples of orifice meter, venturimeter, Pitot tube and rotameter. तो ये hydrodynamic method है. Question already आ चुका है. What are the hydrodynamic methods for measurement of fluid flow? So orifice meter, venturimeter, Pitot tube and rotameter. These are the flow meters. There are 4 flow meters which use the hydrodynamic method. And direct displacement meter is also there. So they has advantages over venturi and orifice meter. Now we will see one by one. पहला होता है orifice meter. So it has a thin plate containing a narrow sharp aperture. इसमें एक thin plate होता है, उसमें एक छोटा सा छेद होता है. Thin plate containing narrow and sharp aperture, है ना. So it is also known as a variable head meter. इसको बोलते हैं variable head meter, and it is also based upon the Bernoulis theorem. मतलब क्या? To calculate the flow of fluid, so Bernoulis theorem is will provide the relation, है ना. Then second होता है venturimeter. It is not much important but question आ सकता है. So in these 2 tapered section in the pipeline with a gradual constriction. तो इसमें क्या होता है कि
like this. So two tapered section in a pipeline with a gradual construction or throat. Now most commonly used to measure the flow of liquid, there is a Venturimeter, again based upon the Bernoulis theorem. ये भी Bernoulis theorem के ऊपर ही based होता है, and it is also referred as a variable head meter. तो synonyms के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. So orifice meter is also known as a variable head meter. Again Venturimeter is also called as a variable head meter. Then next होता है pitot tube. We will see in the detail about these. Don't worry. So it consists of a sensing element. इसमें एक sensing element होता है which will sense the flow and with a small constriction compared to size of the flow channel, also known as the insertion meter. इसको बोलते हैं insertion meter. Pitot tube is also known as the insertion meter, and it will measure the velocity at one point only. Last होता है rotameter. So vertical tapered in transparent tube in which plummet is placed. मतलब इसमें रोटामीटर में क्या होता है कि वर्टिकल होता है, I will show you, but it is also known as a variable. It is also known as a area meter. It's known as area meter used in the chemical industry for such as bulb to measure the flow. It is also used satisfactorily for gases as well as liquid with the high and low pressure. It's short में हुआ है. Now this is known as a orifice meter. Orifice meter. तो this is known as a upstream. यहाँ पे upstream मतलब flow यहाँ से आ रहा है आपका. This is a pipe. This is known as upstream. And this is known as downstream. In between that यहाँ पे देखो orifice plate. Orifice plate. So there is a gradual construction throat. क्या है इसको बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा. So and at this manometer is attached. ये का simple manometer है. We will see the working now. Don't worry. ये भी ये क्या है वेंचुरीमीटर है. इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंचुरीमीटर. तो अपस्ट्रीम फ्लो यहाँ से आ रहा है, दिस इज डाउनस्ट्रीम फ्लो जा रहा है. तो एट इट देयर इज अ tapered section, short gradual tapering is there. तो है ना, ड्यू टू दिस tapering यहाँ से जो फ्लो हो रहा है व्हाट विल हैव हियर वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी विल इंक्रीज. वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी विल इंक्रीज हियर and pressure will also increase. Here velocity, na, pressure will be dropped. To increase the velocity with the pressure drop, and here is increase in the velocity with the pressure drop. यहाँ से pressure कम हो जाएगा. That is measured. तो यहाँ पे again manometer है आपका to measure the pressure differential. Now we see the things important. Method for measurement of flow rate. Direct मेथड होता है डायरेक्ट वेइंग एंड मेजरिंग. इन दिस लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप इज कलेक्टेड एट अ पर्टिकुलर पीरियड. मतलब एक पाइपलाइन है, उसमें से वाटर आ रहा है, तो एक मिनट के लिए आपको कलेक्ट करना है, राइट, एंड इट इज वेड एंड मेजर. एक मिनट में कितना वाटर आया उसका वेइंग करना है आपको, मेजरिंग करना है. नाउ फ्लो रेट कैन बी कैलकुलेटेड एज अ मास ट्रांसफर पर यूनिट टाइम. मास ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज अ फ्लो रेट. It is outdated, it is not used because it is tedious process. Now second method होता है hydrodynamic method. इसमें first orifice method. So it consists of a thin plate containing a narrow sharp aperture. Fluid suddenly passes through a narrow constriction. जब fluid है ना pass होता है इसमें narrow constriction में, so its velocity in a orifice meter increases. The fluid velocity at a orifice meter increases compared to velocity of fluid in a upstream. This results in the corresponding decrease in the pressure rate, मतलब pressure energy. And again this is based upon the Bernoulis theorem. That Bernoulis theorem will provide the basis for correlating the increase in the velocity with the decrease in the pressure at 2 points, and delta P can be read from the manometer. That is a construction of orifice meter.
है ना। बस आपको इतना याद रखना है कि ओरिफाइस मीटर इज अ हाइड्रोडायनामिक मेथड, इट इज अ हाइड्रोडायनामिक मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। थर्ड होता है वेंचुरी मीटर, अगेन कंसिस्ट ऑफ टू टैपर्ड सेक्शन इन द पाइपलाइन। टैपर्ड सेक्शन मतलब ग्रेजुअल कंस्ट्रक्शन होता है, which is known as a throat at its center. When fluid stream is allowed to pass through a narrow throat, the velocity of fluid will decrease, and the velocity of fluid will increase at a venturi compared to velocity of fluid at a upstream. This results in the corresponding decrease in the pressure. So increasing the velocity decreases the pressure energy. Bernoulis theorem again provides the basis for correlating the increase in the velocity with the decrease in the pressure rate between 2 points. Delta P can be read from manometer. Use क्या है इसका, it is used to measure the flow rate of liquid like water and also used to measure the flow rate of gases. Drawback क्या है इसका, it is very expensive and requires more space. Ratio of throat diameter to the pipe diameter is fixed. ये हो गए ओरिफाइस मीटर, वेंचुरीमीटर। डायरेक्ट वेइंग मेजरमेंट दूसरा होता है हाइड्रोडायनामिक मेथड, उसमें ओरिफाइस मीटर है, वेंचुरी मीटर है। देन नेक्स्ट आता है आपका पाइटॉट ट्यूब। तो व्हाट इज अ पाइटॉट ट्यूब? पाइटॉट ट्यूब लुक लाइक दिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ assembly for पाइटॉट ट्यूब, construction assembly for पाइटॉट ट्यूब। तो दिस इज अ पाइप, है ना। तो at this there is a vertical tube inserted in the flow of pipe. Vertical tube insert किया है यहाँ पे, that's why it is also known as insertion meter. Insertion meter is a downstream. It will create a hindrance to the flow of fluid, below which manometer is attached. This is known as a rotameter. So, vertical tube with a tapered, vertical tube tapered, इसमें plummet होता है, float or plummet. So that we'll see now next. So pitot tube also known as a insertion meter. Pitot tube को बोलते हैं insertion meter. तो सबको ये सिंबल से आता है। Now it consists of a sensing element with a small constriction compared to size of the channel. This sensing element is inserted into a center of the stream of the velocity, and इसे बीच में insert, and velocity of fluid is increased due to this. जब आप है ना सेंसिंग एलिमेंट वो थ्रोट डाला है उसमें, due to that velocity of fluid is increased due to this, which correspond to decrease in the pressure rate. Tube is placed at a right angle to the flow of fluid. Now it measures the pressure head only. Tube pointed upstream measures the pressure rate and velocity. मतलब क्या है ना, this measures the pressure head and velocity head. This measures the pressure head only. This tube is inserted in the tube in the pipe, so it has some sensing element. So because of this insertion, what happens? The velocity of fluid at this, यहाँ पे जो velocity है वो बढ़ेगा. Velocity of fluid at the point it increases with the decrease in the pressure rate. So that is checked, that is calculated. So limb measures the pressure and velocity head both. This limb measures the only pressure head. This is a manometer known as a pitot tube. तो उसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक, more disturbance in the flow, air is diffusion in the tube that occurs, which causes disturbance in the reading, do not give average velocity directly, and not suitable for gases. Advantage क्या है? Measures the velocity at point 1 only. Now next is the rotameter. Rotameter होता है next. It is also known as a variable area meter. And it measures the area of flow to produce the constant head differential, also called as area meter. That's why so is also known as a variable area meter.
variable area meter. It measures the flow to produce a constant head. Differential also called as AML. Now it is it consists of a vertical, tapered and transparent tube in which plummet is placed. When flow in the tube, when there is a flow in the tube, जब fluid flow होता है tube में, plummet will rise, मतलब plummet का height ऊपर जाता है and falls due to decrease in the pressure, decrease in the flow. As a result of area of annular space between plummet and tube varies. तो उसमें जो ट्यूब एंड प्लमेट का एरिया है इसमें वेरीज होता है, ट्यूब एंड प्लमेट का एरिया वेरी होता है. जैसे फ्लो ज़्यादा होगा तो ये डिवाइस ज़्यादा ऊपर जाएगी, फ्लो कम होगा तो थोड़ा कम. तो यहाँ से एरिया जो है, दिस एरिया इज चेंजिंग कंटिन्यूसली. The head loss across the annular is equal to the weight of plummet. The upper edge of plummet is fixed as an index. Notes the reading and tapered tube. This value indicate the flow. इसका advantage है direct visual index flow reading. Does not require a condition that state should run before the upper and after the meter. तो यहाँ पे आपको याद एक ही चीज रखना है कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, राइट. तो वो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट वेइंग, सेकंड वन इज नोन हाइड्रोडायनामिक मेथड. So in the hydrodynamic method, orifice meter is there, venturi meter is there, then Whitard tube is there, and rotometer is there. Now direct displacement meter, last one of the direct displacement meter. For the measurement of domestic water supply, total volume of liquid has been passed, meter is used, measure directly. मतलब ये मीटर क्या कर रहा है, total volume of water that is passed a meter, that is measured. It is used to measure the flow rate in the fluid in small lines, जैसे पाइपलाइन होता है उसमें. Is a stream of water would meter and strikes the moving chamber. Disc as in a disc meter or bucket as in a current meter. दो टाइप होता है इसमें, disc meter, current meter. The rate of rotation of moving chamber proportional to the velocity of water passing through the meter. The displacement of moving chamber is transmitted through a chain of gears to a counting dial located on top meter. छोड़ो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. मेरिट्स एडवांटेज ओवर वेंचुरी मीटर एंड वेरिएबल मीटर, orifice meter. Advantage over venturi and orifice meter. Regarding meter, that reading represent the total volume of fluid that has passed. ये हो गया आपका flow of fluid. We have already seen flow of fluid है. पूरा चैप्टर लास्ट टाइम तो मैंने एक ही इसमें लिया, ये 2-3 पार्ट में लिया है, तो अभी तीसरा पार्ट भी फिनिश हो गया आपका. What we have seen in this chapter, we have seen fluid flow, fluid statics, fluid dynamics, right? From the book, right? We have seen the Reynolds experiment, we have seen the Bernoulis theorem, we have seen the energy losses, different types of manometer, we have seen, right? Reynolds experiment, type of flow, turbulent, streamline, we have seen, right? Question भी कहा सकता है, वो भी बोला है मैंने, right? After that we have seen this Bernoulis theorem, right? Then after that we have seen the measurement of fluid flow. The fluid flow measurement उतना important नहीं है, बस नाम याद रखना है आपको, right? After that next chapter is a transportation of fluid. Next chapter is a transportation of fluid. Transportation of fluid means है ना, it is nothing but the carry, and transportation of fluid means what? Movement of fluid from one place to another place. Transportation of fluid, right? So again, valve is what? What is valve? Valve means क्या होता है? Valve is used to control the flow of fluid.
तो वाल्व मतलब क्या, आपने देखा होगा ना पाइपलाइन में सुबह सुबह जो पानी छोड़ने वाला आता है वो वाल्व ओपन करता है, वाल्व क्लोज करता है। Valves are used to control the flow rate of fluid in the pipeline. तो valves, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है आपको टाइप ऑफ वाल्व कमेंट, एकदम शॉर्ट में मैंने एक्सटेंड करके रखा है आपको। तो टाइप ऑफ वाल्व, इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो प्लग कॉक वाल्व, पहला है प्लग कॉक वाल्व। Type of valve, plug cock valve. So it consists of a body casting in which a conical plug, मतलब यहाँ पे क्या है, एक टाइप का बॉडी है ना, जैसे ऐसा में conical plug is fitted with the opening a cylindrical bore. It is used for the handling of compressed air. Plug cock valve. तो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, प्लग कॉक वाल्व एंड इट्स यूजेस, वाल्व एंड इट्स यूजेस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है प्लग कॉक वाल्व इज यूज्ड फॉर द हैंडलिंग ऑफ कंप्रेस्ड एयर। नाउ ग्लोब वाल्व, सेकंड होता है ग्लोब वाल्व। तो इट इज नथिंग बट द इट इज अ कंसिस्ट ऑफ ग्लोब और बॉडी। ग्लोब मतलब ग्लोबल टाइप का बॉडी होता है, ग्लोबल शेप का, with the horizontal insertion partition with the circular opening, and it is used for the pipe of size not more than 50 mm. ग्लोब वॉल इसके लिए यूज होता है, पाइपलाइन नॉट मोर, है ना, पाइपलाइन का साइज इंटरनल डायमीटर कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 50 मिलीमीटर। थर्ड होता है गेट वॉल। तो गेट वॉल इट इज अ वेज शेप्ड इंक्लाइंड सीट टाइप ऑफ गेट दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। फोर्थ होता है डायफ्राम वॉल। तो डायफ्राम इज अ प्रिंसिपल फिजिकल बैरियर फॉर दिस वॉल। दे आर मेड फ्रॉम आइदर फैब्रिक, reinforced natural rubber or synthetic rubber faced with a Teflon. Now suitable for fluid containing suspended solid. Next होता है quick opening valve, mostly used for the short pipelines. Check valve होता है 6 number. It is used when unidirectional flow is required. इसका application uses आ सकता है। Check valve for unidirectional flow, quick opening valve for short lines, diaphragm valve for suitable for fluid containing suspended solid, है ना, globe valve for pipe size not more than 50 millimeter, plug cock valve for handling of compressed air, ठीक है। Now different type of valve made from these valves are made from material क्या रहेंगे उसका, valves are made from either brass, iron or bronze or cast iron and should withstand with the pressure of flow, temperature change, strain on pipeline, distortion and sealing surface. तो ये qualities of valve है। now फिर से देखो plug cock valve, तो body fitted conical plug. Plug is having cylindrical bore through which liquid passes. Packaging material is used around the seam to close it. It is used for a complete opening or complete closing. It is designed for wide purpose. For example, compressed air handling, not suitable for the steam water because it plug comes out frequently. एग्जाम्पल देखो इसको, प्लग कॉक वाल्व, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लग वाल्व। इसमें क्या है, तो यहाँ से आपको पाइप है, दिस इज पाइपलाइन, राइट। तो व्हाट इज द वाल्व, तो हियर इज अ सिलिंड्रिकल, है ना, हियर इज अ सिलिंड्रिकल बोर, सिलिंड्रिकल कॉक। when you turn this valve, when this cylindrical bore will align with the flow, then valve will open, and when you turn this again, so it will close like this. So there is a plug cock valve. Now globe valve, so there is a globular body with a horizontal internal partition
Fluid pass through a circular opening which can be opened and closed by inserting a disc in opening. The disc is in a position to seat in. It can be rotated freely on a string, can be connected for horizontal as well as vertical lines installed at a high pressure site, connecting narrow portion disc. So, used for the pipe less than 50 mm in size, prevents the complete drainage in the horizontal lines. Sludge and scale rust prevent the opening frequently. So it is disadvantage. Sludging होता है, scale formation होता है, rusting होता है उसका, which prevent the opening frequently. Globe wall. Globe wall is this construction of globe wall. So when you turn this to it consists of a globular body and a disc. When you rotate disc, so at that time valve will open and then and it will be closed like this. Third होता है आपका construction of gate wall. Gate wall will look like this. Gate wall कुछ ऐसा है. फोर्थ होता है आपका diaphragm wall. Diaphragm wall. Yes, you see it. Now next one is a gate wall. A wedge-shaped inclined seat type of gate is most commonly used. So pressure on gate is controlling factor. Pressure on gate is controlling factor. Two types of gate: rising steam wall and non-rising steam. ये दो टाइप का होता है gate wall. Available in the large size variety of design, minimize the differential pressure during the opening and stopping of flow. गेट वॉल. गेट वॉल मतलब ये अपना जैसे नलके का ठुट्टी होता है वैसे होता है वॉल. नेक्स्ट इज द डायफ्राम वॉल. नेक्स्ट वन इज द डायफ्राम वॉल. नेक्स्ट वन इज डायफ्राम वॉल. Next one is the diaphragm valve. Valves are used to control the flow rate. Flow of liquid control करने के लिए क्या है? Valve यूज करते हैं. Open close है ना. Flow control करने के लिए valves यूज करते हैं. Valves they are used to control the flow of fluid. Next one is the diaphragm valve. Diaphragm is a flexible physical barrier. Consists of a flexible physical barrier. Valves are made from a fabric reinforced with the natural rubber or synthetic rubber, mixed with the Teflon or fluorocarbon resin. Special grade of rubber diaphragm is coated with the polytetrafluoroethylene or Teflon. Now they are available for separated steam sterilization. So suitable for fluid containing suspended solid. It can easily sterilize. It can be easily sterilized to use in the. It can be used in the sterile product because it is sterilized. इसका advantage का है pressure drop is negligible and complete drainage in the horizontal line. Has excellent performance. Can be replaced easily. Disadvantage होता है इसका applicable for approximately 340 kPa pressure. Expensive and maintenance cost इसका ज़्यादा होता है. That is a disadvantage. Valves.
Third one is a quick opening valve. Third one is a quick opening valve. So quick opening valve ऊपर इसके नहीं, इसके आगे पंप्स है, पंप्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस. तो इन अ गेट valve, steam is threaded and required number of valves to close the valve, number of turns to close the valve. Quick opening valve are smooth steam operated or closed by lever handle. A simple in operation but involves danger of water harmer. कभी कभी क्या होता है, sudden stoppage of flow, velocity is converted into pressure energy and it can be 6 times of the velocity. मतलब अचानक आपको अगर क्विक ओपनिंग वाल्व में अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो वो आपको लग भी सकता है. They are used for short line. They are used for short line. Hello. Hello. हाँ. Sir, I have sent 1,500 address here. Okay. The same address you sent the book. Okay. I will send. I will WhatsApp you if any lackings are in address. I am in a lecture now. I will call you back after it. Oh. Now next one is a check valve. Next one is a check valve. They are used for unidirectional flow. They are for unidirectional flow for protective mechanism to prevent the reversal of flow. Operated automatically when flow of fluid built up the pressure. Three types of check valves are there. Swing check valve, ball check valve, lift check valve, vertical valve. स्विंग चेक वाल होता है, बॉल चेक वाल होता है. इसने का टाकी में आपका पानी की टाकी होती है, टाकी में अगर पानी भर गया तो वो बॉल रहता है, वो बॉल क्लोज करता है, मोटर ऑटोमेटिक बंद होता है. टाइप्स ऑफ पंप्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. पंप्स क्या है? पंप्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड, convert this pumps are used to convert the kinetic energy into pressure energy. तो पंप्स का क्लासिफिकेशन देखो, टाइप्स ऑफ पंप. पहला होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप. एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. तो पिस्टन पंप, प्लंगर पंप एंड डायफ्राम पंप, दे आर द एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप. पिस्टन पंप, प्लंगर पंप एंड डायफ्राम पंप, दे आर द एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप. देन रोटरी पंप का एग्जांपल होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप और गियर पंप. गियर पंप आपने देखा होगा, पुराने ज़माने के जो किराना स्टोर थे उसमें अगर ऑयल खरीदने जाओ आप, ऑयल के ड्रम्स आते थे और वो क्या करता था, ड्रम में वो पाइप डाल के ऑयल निकलता था बाय यूजिंग गियर पंप. नाउ थर्ड इज अ मिसलेनियस पंप, उसमें आता है पेरिस्टाल्टिक पंप. क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. और डबल है ना, पिस्टन पंप, डबल एक्टिंग पिस्टन पंप, सिंगल एक्टिंग पिस्टन पंप, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. तो रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसमें पिस्टन पंप, प्लंगर पंप, डायफ्राम पंप. रोटरी पंप में सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड गियर पंप. इसमें पेरिस्टाल्टिक पंप. पंप क्या होता है? इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस टू इंक्रीज द प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड एंड यूज टू राइज द फ्लूइड फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, है ना. तो आपको पंप कब यूज करना पड़ता है? बोरवेल में से पानी निकालने के लिए, वहां से पानी टंकी में डालने के लिए पंप यूज करते हैं ना. सो इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड एंड यूज्ड टू राइज फ्लूइड फ्रॉम वन लोअर लेवल टू हायर लेवल. तो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, एग्जांपल बोला है मैंने, पिस्टन पंप, प्लंगर पंप एंड डायफ्राम पंप. रोटरी पंप में सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड गियर पंप. मिसलेनियस पंप में पेरिस्टाल्टिक पंप. देखो रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो पंपिंग एलिमेंट मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. इसमें पंपिंग एलिमेंट रहेगा जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करेगा. इन अ सिलेंडर इज अ वाटर सिलेंडर, यूजुअली हैज यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर. रेसिप्रोकेटिंग पंप इज आल्सो यूज्ड फॉर द पंपिंग ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें क्या है कि देयर इज वन एलिमेंट
known as a pumping element which moves forward and backward in a water cylinder. In a simple reciprocating pump, pumping element move forward, known as a downstroke or dilute stroke, and push the liquid out as a discharge is output. Later it recedes, later it comes at the original place due to suction, known as a suction strike, to draw the liquid input. Pumping element is either piston or plunger. तो पहले रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या है कि मूवमेंट होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो जब फॉरवर्ड मूवमेंट होता है नोन एज अ स्ट्रोक, फॉरवर्ड मूवमेंट में क्या है कि फ्लूइड को पंप कर देगा, बैकवर्ड मूवमेंट में फ्लूइड को सक कर देगा, सक्शन एंड पंपिंग बोथ. तो नाउ इन दिस केस द पंपिंग एलिमेंट में भी आइदर पिस्टन और प्लंजर. इसमें जो पंपिंग एलिमेंट है वो आइदर पिस्टन हो सकता है या प्लंजर हो सकता है. रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ पॉजिटिव एक्टिंग टाइप पंप, दैट इज अ displacement pump. It create a pressure and lift the liquid by the displacement of moving of the element, used for the boiler filled water. दूसरा होता है ना, इसमें टाइप देखो, steam reciprocating pump. Steam cylinder contains steam directly connected to the piston rod, water cylinder. Most common type and may have one steam cylinder, simplex, or two cylinder known as a duplex. ये steam reciprocating pump होता है, steam reciprocating pump. नेक्स्ट होता है पावर रेसिप्रोकेटिंग पंप, है ना. इसमें स्टीम यूज करते हैं टू मूव द दैट पंपिंग एलिमेंट टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, स्टीम यूज करेंगे. सेकंड होता है पावर रेसिप्रोकेटिंग पंप. पावर मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर इज यूज टू मूव द पिस्टन, एग्जांपल इलेक्ट्रिकल मोटर. In this case electricity is used to move the piston. Electric motor rotation, the crankshaft is usually used through gear which built by line shaft. तो ये एक मैकेनिक्स का पार्ट है, उस नाम में याद रखना है आपको पंप्स के, बाकी कुछ नहीं. Now piston pumps, they are of different type. Piston pumps, they are of different type depending on the number of water cylinder. अगर एक है तो उसको बोलेंगे सिंप्लेक्स. If one water cylinder is there, known as सिंप्लेक्स piston pump. अगर दो है तो डुप्लेक्स एंड तीन है तो ट्रिप्लेक्स पिस्टन पंप. नाउ सिंप्लेक्स पंप जो है उसमें ड्राइव मैकेनिज्म बेस्ड है. सिंप्लेक्स सिंगल एक्टिंग पिस्टन पंप, मतलब एक स्ट्रोक में फॉरवर्ड मूवमेंट फ्लो करेगा, एक स्ट्रोक में आपका सक करेगा. सिंप्लेक्स एक्टिंग डेक वाल पंप पिस्टन पंप. सिंप्लेक्स डबल एक्टिंग पिस्टन पंप. सिंप्लेक्स सिंगल एक्टिंग में भी टाइप ऑफ वाल्व कौन सा है उसके ऊपर भी. सिंप्लेक्स सिंगल एक्टिंग डक वाल्व पिस्टन पंप. सिंप्लेक्स सिंगल एक्टिंग क्वार्ट वाल्व पिस्टन पंप. पंप का क्लासिफिकेशन है. रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर ऑफ टू टाइप. पहला होता है पिस्टन पंप. पिस्टन रेसिप्रोकेट इन इनक्लोज सिलेंडर, मतलब यहाँ पे पिस्टन रहेगा और टू एंड फ्रो मूव करेगा. हमारा पिस्टन पैकेजिंग मटेरियल विद इट. व्हेन अ पिस्टन विल मूव, पैकेजिंग मटेरियल कैरीड विद द पिस्टन. सिंप्लेक्स जो होता है वन सिलेंडर, पिस्टन रॉड इज जॉइंड. डुप्लेक्स में टू सिलेंडर होता है, टू वाटर सिलेंडर. ट्रिप्लेक्स में तीन वाटर सिलेंडर. पिस्टन रॉड आर जॉइंड सेपरेटली. In duplex type,
two water cylinders are arranged separately side by side in the same frame. piston है ना, piston rod connected separately. एक बार आप इसको बुक में से पढ़ लेना क्योंकि एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है उसके है ना, एक ही बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, तो उसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं कि समझने में कठिन नहीं रहा. In duplex type, two water cylinders are arranged separately side by side in a same frame. Piston rod are connected separately to two stem cylinder. दो स्टीम का सिलेंडर रहेगा इसमें, which are also arranged by side in the same frame. Each cylinder may be either single acting or double acting. सिंगल एक्टिंग पिस्टन पंप, डबल एक्टिंग पिस्टन पंप, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. डबल एक्टिंग पिस्टन पंप इज यूज्ड इन द HPLC, सो इसी के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, दैट्स व्हाई. तो single acting piston pump displaces the water on half of the cycle. Piston movement usually during the downstroke, and during the other half cycle if there is a backward stroke, cylinder will be filled with the fluid. Pump require many more two cylinder valves, one for receiving the liquid in the cylinder and second for the pumping the liquid from the cylinder. It is a limited capacity and discharge is also versatile. Double acting pump may displace the water on a one half of the cylinder and requires minimum 4 valves. which are valve of double acting piston pump. 2 valves for pumping the liquid and 2 valves for receiving the liquid. Several valves are used in order to pump the discharge at a high velocity and more volume of water during the half valve stroke. इसमें डक वाल्व लो प्रेशर एंड यूनिडायरेक्शनल होता है, पॉट वाल्व हाई प्रेशर एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए होता है. यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर construction of simplex double acting steam driven duck valve piston pump. Simplex मतलब वन सिलेंडर, डबल एक्टिंग स्टीम driven, मतलब इसमें स्टीम यूज करते हैं टू ड्राइव द पिस्टन. डक वाल्व, वाल्व कौन सा है, डेक वाल्व पिस्टन पंप. वर्किंग प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड. यहाँ पे देखो, this is a piston and this is a shaft or piston. now यहाँ पे सक्शन वॉल, मतलब ये मान लीजिए आपका ये बोरवेल है, दिस इज a सक्शन वॉल. ये ओपन होता है कब, in this piston piston moves, so suction valve will open and fluid will come into the cylinder. This is known as a water cylinder. Now, right? Now, after suction, this valve will become closed. Suction valve close होता है, and then double acting क्यों बोलते हैं? Because there are two suction valve. Double acting क्यों है? Because two suction valve. In a one stroke, and at a pumping stroke, so it is known as a discharge valve. Discharge valve. So at a one stroke, it will suck liquid or it will suck a fluid into the cylinder by two valve, and at another stroke, it will discharge the liquid through these valves. So double acting piston pump. Double acting piston pump. Plunger pump. Plunger is a reciprocating element and is enclosed in the water cylinder. Plunger will move
move fast in a stationary packaging, suitable for handling of liquid with a high pressure and also for viscous liquid. Plunger pump. इसमें भी simplex 1 cylinder वाला and plunger rod wire shaft is joined. Duplex मतलब 2 cylinder वाला, triplex 3 cylinder वाला. Crankshaft are joined separately. Plunger pump. तीसरा होता है diaphragm pump. Diaphragm में क्या है? Type of reciprocating pump, 2 parts separated by flexible diaphragm. 2 parts separated by flexible diaphragm with the flap of discharge valve at the center and suction valve at the bottom with the material like metal or rubber or plastic. Used for the transporting the liquid containing solid. Also for hazardous and toxic corrosive elements. Plunger pump के भी टाइप होते हैं, simplex, duplex, flex, depending on the number of water cylinder. अगर एक है तो simplex, 2 है तो duplex, 3 है तो triplex. Based upon the placement of packaging material, इसमें packaging material की बेस की simplex inside packed plunger pump, simplex outside packed plunger pump. Method of packaging material fixed to cylinder. Simplex outside center packed plunger pump center. क्लासिफिकेशन होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डुप्लेक्स आउटसाइड एंड प्लंजर पंप. इसमें प्लंजर होगा ना, वहां पे पिस्टन था, पिस्टन एंड प्लंजर. प्लंजर this plunger element will move towards and backwards in the water cylinder. So during one stroke these two valve are suction valve, they will suck liquid. है ना, यहाँ पे एक प्लंजर है, यहाँ पे एक. these two plunger when they move outward, जब outward move करेंगे तो liquid will be sucked into the cylinder, and when they will move towards each other, liquid will be pumped out. Pumped out. Okay. Now this one is a diaphragm valve. Sorry, this one is a diaphragm pump. Diaphragm pump. A rotary pump, liquid is transported, based on the mechanism of rotation of one more element. The rotary stationary casing. रोटरी पंप में क्या है कि लिक्विड इज ट्रांसपोर्टेड बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ रोटेशन ऑफ वन और मोर एलिमेंट विद इन द स्टेशनरी केसिंग. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड मैकेनिकली बाय रोटेशन, that is a pressure one of the element within the stationary housing. एग्जाम्पल है इसका गियर पंप. गियर पंप जैसे मैंने बोला है आपको, also known as a cycloid pump. Okay, on a principle of suction created by two different gears meshed together and rotated externally, used for the viscous liquid like oils and semi solids. जो आपका किराना दुकानदार है उसके पास एक पंप होता है. सेंट्रीफ्यूगल पंप, नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप. Based upon the rotation of blades and impeller, suction is a pressure, suction produces the pressure at the center of pump, in this case suction of liquid into the pump. Centrifugal pump produces the kinetic energy, then convert it into pressure energy, effectively reducing the velocity of liquid. High pressure is then transported. Centrifugal pump को भी क्लासिफिकेशन दिया है, नॉट मच इम्पोर्टेंट. डबल एक्टिंग पिस्टन पंप जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जीपैट में, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस. डबल एक्टिंग पिस्टन पंप displaces the fluid on both half during the cycle. Such pumps require minimum 4 valves, 2 for suction and 2 for pumping out. डबल एक्टिंग पिस्टन पंप के ऊपर एक ही क्वेश्चन आया है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन नहीं आया. दिस विल एंड द टॉपिक. चलो ये
फ्लो ऑफ फ्लूइड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड खत्म हो गया, ठीक, फ्लो ऑफ फ्लूइड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड इज completed. Now tomorrow we'll see the mixing, or either mixing, or we'll see the chemistry of that drug acting on and drug acting on cardiovascular stem. So I will inform in the group. So today's session is over. ये इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फ्लो ऑफ फ्लूइड इम्पोर्टेंट है, इसमें रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट है, मैनोमीटर्स इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बहुत सारा ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, इट इज़ नॉट नीडेड। फॉर्म्स के ऊपर एक बार क्वेश्चन आया है तो वही है ना, ले लिया।